All right, it's a beautiful day. We're somewhere in the regional area of South Australia, and we have came across to experience about the Martindale Hall. Pretty cool place to visit. Just going to take around a little bit of a tour for you guys. I keep this video with the narrations to explain about the place, and I'll try to basically be as simple as I can for the viewers. And yep, I'll keep it bilingual. उर्दू में भी रखेंगे इसको. मार्टिनडेल हॉल है, रीजनल एरिया में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के, और बहुत पुराना बना हुआ है और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छा उसको मेंटेन किया हुआ है. हम अंदर जाके बिल्कुल देखते हैं कैसा है, और आपके साथ थोड़ी बहुत इसकी जो इंटीरियर की बेसिकली मेंटेन हुई भी प्लेसेस हैं वो आपको दिखाएंगे. लेट्स सी. Alright, that's the entrance for the hall, Martindale Hall, and it looks very grand. काफ़ी बड़ी और आलीशान किस्म की एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत बनाई हुई है और बहुत अच्छी प्रिजर्व भी की हुई है. So this is a little bit of an history about the Martindale Hall, which was built in 1879 as a residence for Edmund Bowman, और वो 1879 में बनाई गई और बेसिकली रेजिडेंस थी इनिशियली किसी फैमिली के लिए. एडमंड बोमन नाम था उनका, और फिर बाद में ये इन लोगों ने इसको चेंज कर लिया था और सारी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई है. लेट्स गो इनसाइड. A little bit piece of information and history about the hall. हॉल के बारे में थोड़ी सी मालूमात. चलिए जी अंदर चलते हैं. COVID times, as we have to check in. I did it already because I'm just coming back again. I've written down all of my details. ये entrance है और COVID times की वजह से हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, कब आए थे, कहाँ से आए थे और नंबर वगैरह. So we have already checked in. Let's go in. चलें जी चलते हैं अंदर. Okay, that's what we have. The family tree for the Bowmans. The residence was built initially for the Bowmans. It was a residence for them. ये Bowman family की पूरी शजरा नस्ब है और उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं. That's the main hall, right after the entrance into the Martindale Hall. Quite grand, quite massive. So that's the first room with so many artifacts. काफ़ी मैसिव और काफ़ी ग्रैंड किस्म की एंट्रेंस थी इसकी, और पुराने ज़माने के घरों की तरह बहुत ज़्यादा हाइट पे बेसिकली इसकी छत लगती है. हर रूम की ऐसे ही है कंस्ट्रक्शन, और अगर आप देख सकें it's pretty much high. The construction of the Martindale Hall looks like it is a classical architecture design which used to be famous in previous centuries, I would say. Quite high. Let's get to the next room. The flooring is beautiful, pretty much maintained. And that seems to be a library. Let's get into the library now. It's a bit dark, but huge, massive shelves
filled with the library books and a beautiful pool table. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, शेल्व्स बुक्स ही बुक्स हैं, किताबें ही किताबें हैं, और फर्नीचर भी काफ़ी क्लासिकल है. And that's a big classical billiard table or a snooker table, I don't know, I don't play either game, but yes, beautiful, pretty much well preserved. Some photographs to look for. That seems to be a fireplace to keep the place warm. Okay, it seems to be a washroom, and that seems to be a hallway. Pretty cool in here because it's winters, and yep. That's the kitchen in the Martindale Hall. Martindale Hall का किचन है जहाँ पे बेसिकली इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ था खाना शाना खाने के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रिजर्व हुआ है. Just another doom with heaps of wines, or maybe Shiraz, not sure. Never had it. उर्दू में इसको मैखाना कहते हैं, I suppose. Definitely इनके कल्चर का पार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की भी होंगी, और मोर लाइकली पता नहीं शिराज है कि क्या है, वाइन है, तो नॉट श्योर. हमें क्योंकि अलाउ नहीं है तो इसलिए हम जानते नहीं हैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा, which is good. And that seems to be a big dining hall, quite grand, quite massive, absolutely beautiful. ये more likely dining है जहाँ पे I'm sure एक ऑफिशियल शायद फैमिली डिनर्स वगैरह के लिए नहीं रखे हुए होंगे या कोई विजिटर्स के लिए होंगे, बट वेरी वेरी ग्रैंड, वेरी वेरी ग्रैंड. Furniture overall in this house is pretty much preserved, and it looks like they have restored it, some part of it, and it absolutely looks great. Just another big hall, more likely for some formal meetings, but yes, as mentioned before, it's a very very grand. Especially the walls, I'm absolutely loving them. They have preserved it in a very very well way. The wallpapers are looking absolutely wonderful.
The work on the roof or ceiling seems pretty much restored and maintained. बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने सारा फर्नीचर मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक टेबल, एक चेयर जो है काफ़ी क्लासिकल है, आई थिंक, और उसी दौर की है जिस दौर में ये मोर लाइकली हो सकता है घर बना, या उसके बाद आगे पीछे जब भी उन्होंने फर्नीचर बनाया होगा। तो बहुत अच्छा प्रिजर्व हुआ हुआ है, बहुत अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है, हर चीज़ को बाकायदा तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है सारी की सारी जो भी लगी हुई यहाँ पे, और आखिर प्यारी तस्वीरें जो इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं वो भी तारीफ़ के काबिल है। ये शायद मेरा ख्याल है पियानो के कुछ इंस्ट्रक्शंस वाले पेपर होते हैं, नॉट श्योर, क्योंकि पियानो कभी बजाया नहीं तो पता नहीं है। मोर लाइकली शायद ये वाली फ़िल्म है जो आपको बताती है कि आपने किस तरह से प्ले करना है और क्या प्ले करना है। सो मोर लाइकली ये सारी उसकी वो पड़ी हैं, फिल्म कह लें या जो भी होता है। हम फिर से ग्रैंड हॉल पे आ गए, मेन हॉल है। Let's go upstairs and let's have a look around. There are a few bedrooms which we're going to explore around. ऊपर bedrooms हैं जिनको हम explore करेंगे, और ये basically नीचे देखने के लिए ऊपर का पोर्शन है। ये भी बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और चलें हम पहले रूम की तरफ चलते हैं। ओके, this seems to be a room for maybe a toddler, किसी छोटे बच्चे का रूम लग रहा है, क्योंकि टॉयज हैं, कपड़े हैं, कॉट है, काफ़ी क्लासिकल कॉट है। इट्स pretty much classical cot. The thing which really looks amazing to me over here was this baby powder. I'm not sure if you guys can see this, but yes, it's very 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 classical. बहुत पुरानी बेबी पाउडर की बोतल है, और साथ उसके आई थिंक ड्राई वाटर होगा, नॉट श्योर, लेकिन बहुत अच्छी जगह। अगेन फायरप्लेस, और फायरप्लेस के नीचे जो टाइल वर्क हुआ है ये बहुत खूबसूरत है, इट्स नाइस। There is a room connected to the toddler room. It could be a main room for the parents. वालदेन का रूम हो सकता है ये, क्योंकि बड़ा रूम है साथ बच्चे के रूम के, ये कनेक्शन है साथ उसके। और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो थी वो मुझे लगी थी ये वाली सूटकेस। बहुत क्लासिकल है, बहुत पुराना सा है, और बड़ा अच्छा प्रिजर्व भी हुआ है, और कोई स्टिकर भी लगा हुआ है एडलेट टू सिडनी का। Chest of drawers. Yep. So that was probably the nanny's room. Got it. We found the answer. So ये जो रूम है ये नैनी रूम है, मतलब जो बच्चे की देखभाल करती थी उनका रूम लग रहा है, और it seems to be a photograph of someone back in times 1858. Pretty old. Yes, that's a nanny's room. We got the answer. Yeah.
back to the hall. Beautiful hall. Okay, let's head to another room, and that's massive. That's absolutely massive. That looks like a big room. काफ़ी बड़ा रूम है और मेरा ख्याल है शायद मास्टर रूम भी हो सकता है, मेरा ख्याल है, नॉट श्योर। कहीं लिखी नहीं है कोई इंस्ट्रक्शंस, बट लग कुछ ऐसा ही रहा है साइज के हिसाब से। बहुत ही खूबसूरती के साथ इधर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रिजर्व हुई हुई हैं, बहुत खूबसूरती के साथ। इम्प्रेसिव। अटैच वॉशरूम, और ये उस बड़े रूम के साथ का वॉशरूम है। बाथटब है क्लासिकल लगा हुआ, और कोई सिंक नहीं है, शायद उस दौर में सिंक का दौर नहीं था। एक बड़ा सारा आई डोंट नो जग है, जो आई थिंक मोर लाइकली फेस वॉश के लिए, ये मोर लाइकली साबुन था। ओवरऑल जो फ्लोर पे वुडन इन लोगों ने टाइलिंग की हुई है, वो भी मेरा ख्याल है कि उसी दौर की होगी, इसीलिए लकड़ी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रिजर्व भी की है। लेट्स हेड टू द अदर रूम, दैट्स आल्सो आई थिंक अ मेन रूम, मे बी किसी एक आध और फैमिली मेम्बर के लिए, किसी एडल्ट के लिए। इट लुक्स लाइक एन एडल्ट रूम। बहुत सारी खिड़कियां हैं इस रूम के अंदर, 1 2 3 4 बड़ी खिड़कियां, और ये ड्रेसिंग टेबल है। Let's get to the washroom. Okay, they had 4 big windows in this room, and that's a washroom attached to this room, which probably belongs to one of the adults, maybe, looks like. And they've got the shower. I'm not sure if you guys can see over here, but yeah, that's a shower. Another bathtub, and this window is going to give us the view for the main entrance. This is where we come from into the Martindale Hall. So ये वो जगह जहाँ से हम आए थे, main entrance. Okay, G. This is the room which I wanted to show you all, but before that, I just wanted to capture a beautiful ship, miniature of a ship, classical, but I don't know if you guys can ever see that, but yeah, it looks nice. Okay, this is the room which I wanted to share with you a story about. I'll show you the story of a child called Valentine, and a bit scary, but that's something which they have mentioned about it. There was a child who was born here and who died at the age of 8 in 1906, and according to some staff members and some of the visitors, they have spotted that boy several times, and the last time they spotted the boy called Valentine in 2011, and that's what it is about. So this is the death certificate of Valentine. इस रूम के बारे में कहानी है कि जी यहाँ पे कोई बच्चा था 8 साल का वैलेंटाइन, जो कि फौत हो गया था किसी बीमारी की वजह से, और
उसकी 3 से 4 दफ़ा कोई मेरे ख्याल में लोगों ने साइटिंग की है। लास्ट टाइम इसको देखा था यहाँ पे किसी 3 साल के बच्चे ने, जो कि इसके साथ खेलना शुरू हो गया था इस रूम के अंदर। और बकौल उस बच्चे की 3 साल के बच्चे की माँ के 2011 में वो बच्चे ने जो डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे मुझे कोई एंजल नुमा बच्चा नज़र आ रहा है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। तो इस रूम के बारे में ये कहानी है। वैलेंटाइन का रूम है ये। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट रूम। ओके ये रूम मोर लाइकली सिलाई कढ़ाई वाले शौकीन लोगों का लग रहा है। आई एम श्योर someone must have been fond of the sewing machine and the stuff related to that. Somebody must be involved in a lot of stitching and the stuff. And yeah, quite classical again. ये मोर लाइकली किसी मेड का रूम हो सकता है मेरे हिसाब से। इट लुक्स लाइक a room of a maid because of the dress which is hanging here. So I'm assuming it could be a room of a maid in the house. किसी मेड का रूम इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके कपड़े लटके हैं। तो मोर लाइकली ये किसी मेड का रूम हो सकता है, मेड रूम जिसको कहते हैं। एक और छोटा सा डाइनिंग टेबल के साथ डाइनिंग टेबल है सॉरी, और इसके साथ एक हॉल के अंदर है फॉर सम कैजुअल सिटिंग्स और डिनर्स और आई डोंट नो एनीथिंग। Right, I believe I've tried to capture everything so far. Let's see if I have missed that part. Yes, that seems to be the last room, maybe. And that looks like the maid room as well. एक और रूम है मेरा ख्याल है ये भी शायद मेड रूम है क्योंकि इधर भी किसी मेड का यूनिफॉर्म लटका हुआ है, तो could be a maid room. Several rooms are being locked and that's only been accessible by the staff. So yeah, कुछ रूम जिनमें बंद रखे हैं और वो शायद स्टाफ के लिए। और ये है जी when exit, let's get back. That's it. Thank you everyone for watching this.